Welcome to ZT classes. Let's see our next proving question. So we have been given a vertical tower stands on a horizontal plane. So we have got a vertical tower standing on horizontal plane. Let's say the tower is AB and is surmounted by a vertical flagstaff of height h. तो बेटा इस टावर के ऊपर जो है एक छोटा सा फ्लैग लगा देते हैं और इस फ्लैग की हाइट जो है दैट इज h meters is there. At a point on the plane, the angles of elevation of bottom and top of the flagstaff. तो बेटा ये जो पॉइंट है bottom is A, top is Q. इनका angle of elevation from any point A on the ground is alpha and beta. So let's say the point is P. Its angle of elevation from A is given as alpha, and from Q, that is top of the flag, is given as beta. You have to prove that height of the tower is AB. So basically you have to find AB, or you have to prove AB is equals to h times tan alpha upon tan beta minus tan alpha. Let's see the solution. So in this we have been given AB is the tower and QA is the flag surmounted on top of it, and P is the point of observation, and your angle APB is alpha and angle QPB is beta. You have to prove that height of tower or AB is h times tan alpha upon tan beta minus tan alpha. That's the proof. अरे कहानी तो वापस वही चालू है. क्या कहानी है हमारे पास? दो राइट एंगल ट्राइंगल होंगे. उन दो राइट एंगल ट्राइंगल में यू हैव टू फाइंड द जो आपका गिवन डाटा है दैट यू हैव टू यूज एंड यू हैव टू फाइंड व्हाट इज आस्क्ड हियर. सो बेटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप लेंगे उसमें ए बी जो है वो इंक्लूड होना चाहिए, है ना, क्योंकि ए बी इज व्हाट यू हैव टू फाइंड. ऑल्सो इन दोनों ट्राइंगल में जो ए पी बी है और क्यू पी बी है, इन दोनों ट्राइंगल में पी बी जो है वो कॉमन है. तो आप कौन सी रेशियो लेंगे? 10 रेशियो, है ना, और उसमें फिर पी बी को आप एलिमिनेट कर दें, यू विल गेट योर आंसर. सो लेट्स सी द प्रूफ. सो लेट्स टेक द ट्राइंगल ए पी बी फर्स्ट. सो इन ट्राइंगल पी ए बी tan alpha is perpendicular upon base और AB upon PB, राइट. सो यहाँ पर जो PB की वैल्यू है दैट इज AB upon tan alpha. ठीक है. तो अब जो हम ट्राइंगल लेंगे दैट ट्राइंगल विल बी QPB एंड उसमें QPB में हमारे पास PB जो है विल यूज दिस वैल्यू इन दैट. सो लेट्स टेक द नेक्स्ट ट्राइंगल दैट इज QPB. So in that tan beta is QB upon PB. ठीक है, perpendicular upon base. So QB is nothing but H plus AB. So and what is value of PB? PB is nothing but AB upon tan alpha. So let's replace these two values. You will get tan beta is H plus AB, that is QB अपॉन PB, और PB की हमने ये वाली वैल्यू जो है बेटा PB की जगह पर डाली है ना. तो दैट्स इट. हमारे पास अभी सारी चीज़ें आ गई हैं. हमें इसमें सिंप्लीफाई करना है टू गेट द वैल्यू ऑफ AB. तो आई हैव डन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और यहाँ पर डिनोमिनेटर का जो tan अल्फा है वो ऊपर चला गया आपका, है ना. सिंप्लीफाई करेंगे एंड यू विल गेट वैल्यू ऑफ AB एज h tan alpha upon tan beta minus tan alpha. So we have got our height of tower and hence proved.